तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस से अभी हम लोग शुरू करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होगा? फंडामेंटल एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस में we will be having say certain methods by which we will make the calculation of the value of the company। जैसे कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी मेथड है, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म मेथड है, नेट असेट मेथड है। ऐसा कोई भी एक मेथड होगा जिससे हम लोग वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारा वैल्यू आता है, सो दैट इज व्हाट्स द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। वी अंडरस्टैंड दैट अगर एक्चुअल प्राइस उससे कम है, देन इन दैट केस द सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड और हमको सिक्योरिटी बाय करना चाहिए। अगर एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, देन इन दैट केस इट इज ओवर प्राइस्ड, तो उसको बाय नहीं करना चाहिए। दैट इज द वे वी कैन टेक द डिसीजन with respect to the fundamental analysis. Let us read the content. Fundamental analysis is based upon assumption that share prices depend upon the future dividend expected by the shareholder. तो उनका एक बेसिक एक ऐसा फंडामेंटल है कि आज का प्राइस फ्यूचर डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करता है। The present value of the future dividend can be calculated by discounting the cash flow at an appropriate discounting rate and known the intrinsic value of the share. Intrinsic value bolo, fair value bolo, that is one and the same. The intrinsic value of the share according to the fundamental analysis decide the true value of the share. यानी ये एक्चुअली वैल्यू उसका होना चाहिए। A share that is priced below the intrinsic value must be purchased. Share quoted above the intrinsic value must be sold if at all you are holding it. या तो आप naked short position भी ले सकते हो। It can be said that the price of the shareholders are prepared to pay for a share is nothing but the present value of the dividend that they expect to receive on the share, and this is the price at which they expect to sell in the future. As a first step to arrive at a compact expression, let us make a simple assumption that the dividend expected to pay uniform, that is rupees D per share. तो P0 का कैलकुलेशन कैसे होगा? D1 अपॉन के, यानी अगर सीधा डिविडेंड का अमाउंट सेम रहने वाला है तो। But it is unrealistic to assume that the dividend will remain constant over the time. In case of most shares, dividend per share grow because of the growth in the earning of the firm. Most companies, as they identify the new investment opportunity for the growth, tend to increase the dividend per share over the period of time. Let us assume that, say, on an average, the dividend per share of a company grows at a compounded rate of G, यानी जो डिविडेंड है वो ग्रो हो रहा है at the rate of growth rate. Let us assume that so that D1, that is D1 is the dividend at the end of the first period, grows D1 into 1 plus C, वो सेकेंड ईयर का हो जाएगा, D1 into 1 plus C raised to 2 थर्ड ईयर का हो जाएगा, at the end of the second period, third period, etc. respectively. So we must have, this is again the formula that we have for calculation of the price, and when we simplify, so the answer is P0 is equal to D1 upon Ke minus C. इसका डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं, so when we are doing so the dividend discount model approach for the purpose of calculation of the P0. Next, when the growth rate in the dividend G equals to or greater than the desired rate of return, that is on share, K above the model is not valid, since the geometric series leads to an indefinite price. तो ऐसा नहीं हो सकता है that the growth rate is greater than the cost of capital, ऐसा वो लोग बोलना चाहते हैं। The condition that the G will be less than K is not very restrictive, since the long-term growth in the dividend is unlikely to exceed the rate of return expected by the shareholders.
तो इन लोगों का कहना ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सीडिंग ग्रोथ रेट, ये मानना कुछ गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फेयर टू अज्यूम. द अबाउट रिजल्ट, इक्वेशन 5 इज नोन एज द गॉर्डन्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. तो एक डिविडेंड पॉलिसी है जिसका नाम है गॉर्डन मॉडल, उसमें से ये फॉर्मूला लगाया जाता है. नेम्ड आफ्टर द मॉडल्स ओरिजिनेटर मेरॉन जे गॉर्डन. This is one of the most well-known models in the gender genre of the fundamental analysis. In equation number 6, if the growth rate sets to be 0, we go back to the equation number 3. यानी मैं तो बोलता हूँ कि हमेशा यही फॉर्मूला लगाने का. ग्रोथ रेट नहीं है तो उसको 0 ले लो, ग्रोथ रेट है तो उसको लिख दो. डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड द प्राइस अर्निंग मल्टीपल. तो ये सारा वैल्यूएशन का पॉइंट है. हाँ, जो भी हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में ये सब कर रहे हैं उसमें ये वैल्यूएशन को कम इंपॉर्टेंस हमने दिया है, एक्सेप्ट वी हैव डन अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द CAPM जिसमें हमने प्राइस का कैलकुलेशन किया है. बट उसके साथ साथ वी आर हैविंग अ चैप्टर कॉल्ड सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसमें ये सब चीज़ वापस हम लोग डिटेल में करते हैं. उसके अलावा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, उसमें भी ये पॉइंट वापस आता है. फाइनेंशियल एनालिसिस्ट tend to relate the price to earning via PE multiple, the ratio between the market price and the earning per share. If a company is assumed to pay out a fraction B of its earning as a dividend on an average, that is dividend payout ratio is B. D1 may be expressed as B into D1. तो यहाँ पे B उन्होंने वेरिएबल डिविडेंड पे आउट रेशियो को रखा है. सो जितना अर्न करेंगे इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डिविडेंड. E1 is the earning per share EPS at the end of the first period. तो इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट. और अगर नेक्स्ट ईयर का हमको चाहिए तो ये जो है उसको 1+3 से मल्टीप्लाई करने का. यहाँ पे EPS ऑफ ईयर 0 लिया जाए. द फंडामेंटल एनालिसिस यूज द अबव मॉडल्स और सम ऑफ देयर वेरिएशंस फॉर एस्टिमेटिंग द फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ फंडामेंटल प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ अ सिक्योरिटी. Towards this end, they devote considerable effort in assessing the impact of the various kinds of the information on the company's future profitability and the expected return on the shareholders. If the prevailing price or the price earning multiple of a security is higher than the estimated fundamental value, that is, if the security appears to be overpriced, they recommend a selling stance with respect to that security. Since one information becomes common knowledge, price of the security may be expected to fall. On the other hand, if the security is underpriced in the market, the prevailing price or the price earning multiple being lower than the estimated fundamental value, they recommend for buying and counting upon say the rise in the price. यानी बेसिकली ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं जैसे हम लोगों ने CAPM में पढ़ा हुआ है, दिस इज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन. अगर सिक्योरिटी अंडर प्राइस्ड है तो सब लोग बाय करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा और उसका रिटर्न कम हो जाएगा. अगर सिक्योरिटी ओवर प्राइस है तो सब लोग सेल करेंगे जिसकी वजह से प्राइस उसका कम होगा और दैट प्राइस विल अगेन फॉल ऑन द सिक्योरिटी मार्केट लाइन. दैट इज द सिक्योरिटी विल अगेन फॉल ऑन द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ऐसा हम लोग समझते हैं. Because of these inherent complex interrelationships in the production process, the fortunes of each industry are closely tied to those of the other industries and to the performance of the economy as a whole. Within an industry, the prospects of specific company depend not only on the prospects of the industry to which it belongs to,
but also its operating and the competitive position within the industry. Because of these inherent complex interrelationships in the production process, the fortune of each industry are closely tied to those of the other industry and the performance of the economy as a whole. Within an industry, the prospects of a specific company depend not only on the prospects of the industry to that is it belongs to, but also on the operating and the competitive position within that industry. The key variable an investor must monitor in order to carry out the fundamental analysis are economic wide factors, industry wide factors, and the company specific factors. In other words, fundamental analysis encompasses economic, industrial, and the company analysis. They are baptized three economic circles and constitute the different stages in the investment decision process: economy, industry, and company. तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इकोनॉमी का मतलब हम लोग बेसिकली कुछ ऐसा समझेंगे दैट से हम लोग कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे. वेदर वी विल मेक इन्वेस्टमेंट इन जर्मनी, वी विल मेक इन्वेस्टमेंट इन यूरोप, विल मेक इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड किंगडम, विल मेक इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हमको कौन सी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. उसके बाद दैट इज से कंट्री का जीडीपी कैसा है, से कंपनी दैट इज से द कंट्री में लाइक मॉनसून कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है. इन सब चीज़ को कंसिडर करके हम लोग कोई भी एक कंट्री को सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद से वी विल मेक इन्वेस्टमेंट इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री. जैसे कि हमको पता है डेट से अलग अलग इंडस्ट्रीज होता है. फार्मा इंडस्ट्री है, देन वी अंडरस्टैंड बैंकिंग इंडस्ट्री है, देन रिफाइनरी इंडस्ट्री है. लाइक दैट से देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर देयर इन द मार्केट. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है. तो कौन सा इंडस्ट्री लाइकली टू ग्रो है से उसका हम लोग एक एनालिसिस करेंगे. फिर सपोज कि हमको फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, तो फार्मा में भी क्या होता है कि कई सारी इससे कंपनीज है. जैसे कि वी अंडरस्टैंड सिप्ला है, रेनबैक्सी है, टोरेंट है, फाइजर है. तो ये सब से जो एक ही इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज है, उसमें से कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना वो हमको डिसाइड करना है. तो ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेक्शन ऑफ द कंपनी इन विच वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट. ऐसा ये लोग बोलना चाहते हैं. लेट अस रीड. Macroeconomic factors. Example, the historical performance of the economy in the past or present and the expectation in the future, growth of the different sectors in the economy in future with the sign of the stagnation, degradation at present to be assessed while analyzing the overall economy. Trends in the people, income and expenditure reflect the growth of a particular industry or a company in future. Consumption affects the corporate profit, dividend and the share price in the market. तो इन सब चीज के ऊपर फोकस करके हम लोग इकोनॉमी का एनालिसिस कर सकते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एनालिसिस. तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो उन्होंने बताया है. सम ऑफ द इकोनॉमी वाइड फैक्टर्स आर डिस्कस्ड एज अंडर. फर्स्ट है ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड मेजर्स. ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्फ्लेशन एंड मॉनसून. तो उन्होंने यहाँ पे 4 फैक्टर्स बताए. से दीज 4 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन द इकोनॉमिक एनालिसिस. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स. सो जो हम लोग जीडीपी के लिए पढ़ते हैं से उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. फॉर मोस्ट पर्पसेस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द nominal growth rate quoted by the GDP and the real growth rate after taking into inflation into account. We know that there are 2 types of growth rate. One is the nominal growth rate and another is the real growth rate. Nominal growth में क्या होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है. और रियल ग्रोथ में क्या होता है, लेट्स से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता है. जैसे कि अगर हम लोग देखें, लेट्स से सपोज एक कंपनी का सेल्स वैल्यू जो है
अगर हम लोग पिछले 3 साल का देखें तो उनका सेल्स वैल्यू जो 2 लाख था वो हो गया 2,30,000 और वो हो गया लेट अस से 2,60,000. So apparently we see that say there is a like growth rate of 15% and say slightly lower than 15% in the next year. 2.3 minus 2 divided by 2. So 15 percentage. Again 0.3 divided by 2.3. So 13.04 percentage. That is what say we can see is the growth in the sales. But suppose ki inflation है 10 percentage. So we understand that say 2,30,000 divided by 1.1. यानी क्या हुआ in terms of the quantity so there is an increase from 2 lakhs to 2,09,000. Then 2,60,000 divided by 1.1 divided by 1.1, that is 2,14,876. So 209,090 minus 2 lakhs divided by 2 lakhs into 100. यानी क्या हुआ से ग्रोथ रेट इन फैक्ट 4.55% इन टर्म्स ऑफ द रियल ग्रोथ रेट. 214,876 minus 209,090 divided by so that comes to 2.77%. तो रियल ग्रोथ कितना है? कम है, इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा दिखता है. The estimated growth rate of the economy would be a pointer to prospects for the industrial sector and therefore to the returns investor can expect from the investment in the shares. यानी ये लोग सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ इन द नेशनल इनकम उनको देखने का है. अगर नेशनल इनकम में ग्रो होने वाला है तो क्या होगा कि इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ हो सकता है, पर अगर पूरा इकोनॉमी ही नीचे जा रहा है then in that case we understand that say that is not the country in which we would like to make investment. Growth rate of the industrial sector, this can be further broken down into the growth rate of the various industries or group of the industries if required. The growth rate in the various industries are estimated based on estimated demand for the products. Inflation. High inflation is not a good sign. Inflation is measured in terms of the either wholesale prices, the wholesale price index or WPI, or retail prices, consumer index or CPI. The demand in some industries, particularly the consumer products industries, is significantly influenced by the inflation rate. Therefore, the firms in these industries make continuous assessment about the inflation rate likely to prevail in the near future so as to fine-tune their pricing, distribution and the promotion policies to the anticipated impact of the inflation on the demand of their products. Monsoon, because of the strong forward and the backward linkages, monsoon is of the great concern to the investors in the stock market. यानी कि जहाँ पे वेदर कंडीशन अच्छा है, मानसून अच्छा है, तो मानसून से रिलेटेड बहुत ही नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड है. दैट इज व्हाट द फंडामेंटल ऑफ द इकोनॉमिक्स. तो इसकी वजह से वी अंडरस्टैंड दैट से मानसून जो कंट्री का अच्छा है से दैट इज से मोर लाइकली इन विच यू वुड लाइक टू मेक इन्वेस्टमेंट. तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं ना, से उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो कौन कौन से फैक्टर्स इकोनॉमिक के एनालिसिस को अफेक्ट करेंगे? In that say these are the 4 factors that you are required to mention. अच्छा, इकोनॉमिक एनालिसिस में अभी नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस. इकोनॉमिक एनालिसिस करने का वो पता चला, पर कैसे किया जाएगा वो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे. उन्होंने दे रखा है एक एंटीसिपेटरी सर्वे, दूसरा दे रखा है बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, तीसरा दे रखा है इकोनॉमिक मॉडलिंग economic model building approach. These are the 3 the techniques that they have provided. क्या करने का है इकोनॉमिक एनालिसिस? वो करते समय हमको कौन से 4 चीज का ध्यान रखना है वो हमने पढ़ लिया. अभी कैसे करना है उसके ऊपर अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं. इकोनॉमिक एनालिसिस इज यूज्ड टू फोरकास्ट national income with its various components that have bearing on the concerned industry and the company in particular.
Gross national product, GNP, is used to measure the national income as it reflects the growth rate in the economic activities and has been regarded as forecasting tool for analyzing the overall economy along with its various components during a particular period. Some of the techniques used for the economic analysis are, so कुछ techniques है से उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. They help the investors to form an opinion about the future state of the economy. अच्छा, एंटिसिपेटरी सर्वे यानी कि हम लोग सर्वे करके ये ट्राई दैट इज ये लाइक जानने का ट्राई करेंगे कि हमारा मीन्स ये इकोनॉमी कौन सी ओर ग्रो हो रहा है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज एंटिसिपेटरी सर्वे. It incorporates the expert opinion of construction activities, expenditure on the plant and machinery. हमेशा हमको पता है कुछ ऐसा होता है. Let us say that say I have started a new business of trading. मैंने कुछ भी प्रोडक्ट ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया. तो इनिशियली मैं क्या करूंगा हमेशा, so I'll try to curtail my capital expenditure. हम लोग एकदम से ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर देते. हम लोग इनिशियली क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं. जब मैं सपोज कि एक नया ऑफिस लेता हूँ मेरे बिजनेस के लिए, तो वो क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बताता है क्या दैट से भी मेरा बिजनेस अच्छा चलने वाला है. तो ये लोग क्या दैट इज से कहना चाहते हैं, दैट से हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कितना हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेवल ऑफ इन्वेंटरी कितना रख रहे हैं, इन सब का हम लोग सर्वे करते हैं. एंड ऑल हैविंग सर द बेयरिंग ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Future spending habits of the consumer will also be taken into account. In spite of the valuable inputs available through this method, it has certain drawbacks. Survey results do not guarantee that the intentions surveyed would materialize. यानी कि जो भी इस सर्वे का रिजल्ट है वो एक्चुअली होगा. वो सैंपल साइज आपने कितना लिया, आपने कितना एक्यूरेट सर्वे लिया है, से उन सब के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. They are not regarded as the forecast per se, as there can be say consensus approach by investors for exercising this option. Continuous monitoring of this practice is called to make this technique popular. तो constantly हमको ये चीज करना पड़ेगा. बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, यानी कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट से कुछ एक्टिविटीज के ऊपर से हम लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि इकोनॉमी कौन सी ओर जा रहा है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच. जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था दैट से सपोज कि मेरे बिजनेस में अब तक मैं क्या करता था कि मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेरा गुड्स कस्टमर को बेचने के लिए से आई वाज से यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फ्रॉम आउटसाइडर. मैं बाहर के जो भी ट्रांसपोर्टर्स थे उनका मैं यूज़ कर रहा था, उनका मैं सर्विस ले रहा था फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग माय बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग गुड्स. नाउ सपोज कि मैं ऐसा कर रहा हूँ दैट से मैं इन हाउस एक लॉजिस्टिक सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप कर रहा हूँ. तो अगर मैं लॉजिस्टिक सिस्टम पूरा का पूरा इन हाउस डेवलप कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ दैट इज अ पॉजिटिव साइन दैट से मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट से इंस्टेड ऑफ गिविंग बिजनेस टू आउटसाइडर्स लेट मी डू दैट बिजनेस. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, जिसमें उन्होंने दो इंडिकेटर्स बताए, तीन इंडिकेटर्स बेसिकली, पर दो इंपॉर्टेंट है. वन इज द लीडिंग इंडिकेटर, द अदर इज द लैगिंग इंडिकेटर एंड द थर्ड इज द कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर. लीडिंग का मतलब क्या कि कुछ एक्टिविटीज के ऊपर से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या होगा. That is what we understand is the leading indicator. Lagging indicator का मतलब क्या हुआ, let's say वो इवेंट हो जाता है ना, फिर हमको पता चलता है कि हाँ भाई इसमें ऐसा हुआ है. That is what we understand is the lagging indicator. जैसे कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं let's say कोई भी कंट्री का जो जीडीपी का रिजल्ट्स बाहर आता है उसके ऊपर से फिर हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये कंट्री में आगे क्या होगा. तो वो जीडीपी का रिजल्ट कब बाहर आता है, ईयर एंड में बाहर आता है. तो वो जब ईयर एंड में बाहर आता है ना, उसके ऊपर से हम लोग अंदाजा लगाते हैं दैट सभी इसमें फ्यूचर में क्या होगा. तो उसको लैगिंग इंडिकेटर बोला जाता है.
यानी कि इवेंट हो जाने के बाद जो आउटकम आता है ना, उसके ऊपर से हम लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये कंट्री में भी क्या होगा. Let us read this content. Various indicators are used to find out the how the economy shall perform in the future. The indicators have been classified as under leading indicator. They lead economic activity in terms of their outcome. They relate to the time series data of variables that reach out high low points in advance of the economic activity. तो पूरी कंट्री का जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है से उसके ऊपर से हम लोग अंदाजा लगाते हैं. जैसे कि वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी गवर्नमेंट का बजट्स होता है, तो बजट्स में से ऊपर से हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं दैट से गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को प्रमोट करने वाला है. तो वो लीडिंग इंडिकेटर हो गया. वो किसको इंसेंटिव देता है, वो लीडिंग इंडिकेटर हो गया. कौन से सेक्टर को वो लाइक टैक्स उसके ऊपर बर्डन वो बढ़ा रहा है, so that sector is likely to say face difficulty in future. That is what a leading indicator. Then lagging indicator, they are time series data of the variables that lag behind their consequences vis-a-vis the economy. They reach their turning points after the economy has reached its own already. यानी बाद में पता चलता है ना. लीडिंग लीडर है ना, लीडर का लीडिंग है, लैगिंग यानी बाद में. दे रीच देयर पीक्स एंड ट्रफ्स एट अप्रोक्सीमेटली द सेम इन द इकोनॉमी. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज रफली कोइंसिडेंशियल. ऑल दीज अप्रोचेस सजेस्ट डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बट नथिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो हमको पता चल सकता है, पर एग्जैक्टली वो पता नहीं चल सकता है कि कौन से रेट में. द वेरियस मेजर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच इंडिकेटर्स मे गिव conflicting results about the future direction of the economy. To avoid this limitation, use of the diffusion or the composite index is suggested, whereby combining several indicators into one index to measure the strength or weakness in the movement of the particular set of the indicators. Computation of the diffusion indices is no doubt difficult, notwithstanding the fact it does not eliminate irregular movements. Money supply in the economy also affects the investment decision. The rate of the change in the money supply in the economy affects GNP, corporate profit, interest rates, stock prices. Increase in the money supply fuels inflation. As investment in the stock is considered as a hedge against the inflation, stock price goes up during inflationary period. So this is very important that they have specified over here कि हमेशा याद रखो that से स्टॉक मार्केट का रिटर्न ही एक ऐसा रिटर्न है जो इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट करेगा. फिक्स सिक्योरिटी का रिटर्न जो है ना, वो ओवर द टाइम पीरियड इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता है. दिस इज व्हाट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच. तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच में क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें कुछ ऐसा होगा कि इन दैट से फॉर एग्जांपल हमको कोई एक कंपनी का से नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा उसका एस्टिमेशन करना है. तो हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट से पिछले 5 साल में उसमें सेल्स में कितना ग्रो हुआ है, उसका एवरेज हम लोग नेक्स्ट ईयर में ग्रो होगा ऐसा हम लोग मान लेंगे. उसका जीपी रेशो कितना है पिछले 5 साल में, उनके एक्सपेंसेस के रेशो क्या है, ऐसा कुछ हम लोग क्या करते हैं दैट से उनका पिछले कुछ 5 साल का या 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट से वी हैव अ प्रोजेक्टेड एक्टिविटी. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होता है. यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा दैट से वी विल बी हैविंग से द इकोनॉमिक बिल्डिंग अप्रोच, जिसमें वी विल बी हैविंग दैट से फ्यूचर में भाई इकोनॉमी का क्या ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का क्या सिचुएशन होगा, उसके लिए हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज का जो भी डेटा है ना उसके ऊपर से हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि क्या होने वाला है. लेट अस रीड दिस.
In this approach, a precise and a clear relationship between dependent and independent variables is determined. GNP, model building or sectorial analysis, is used in practice through the National Accounting Framework. The steps used are as follows. Hypothesis: total economic demand by measuring total income based on the political stability, rate of inflation, change in the economic level. यानी कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, डेट से भाई टोटल डिमांड क्या रहेगा, टोटल इनकम क्या रहेगा, उसका हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो है 4%, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसा एस्टैब्लिश किया कि जो भी सेल्स होगा ना उसका 4 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा, कुछ ऐसा. तो हाइपोथेसिस मींस क्या कि यू बिल्ड दैट से भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द हाइपोथेसिस. Forecasting the GNP by establishing the level of the various component, namely consumption expenditure, gross private domestic investment, government purchase of the goods or services, net of export. तो ये क्या करने का है, दैट से ये हमको फोरकास्ट करना है. द gross national production by estimating the various level of the components. After forecasting the individual components of the GNP, add them up to obtain the forecasted GNP. तो इन सब का फोरकास्टिंग करने से हमको क्या मिलेगा, फिर फोरकास्टेड GNP मिलेगा. Comparison is made of the total GNP thus arrived at with that form an independent agency for forecasting the GNP, and then overall forecast is tested for the consistency. This is carried out for ensuring that both total forecast and the component wise forecast fit together in a reasonable manner. यानी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, that say we make the forecasting of the GNP say based on these kind of analysis. तो इस हिसाब से हम लोग GNP का economic model building, that say we make the forecasting of the GNP. तो we understand that say the economic analysis से करने के लिए उन्होंने 4 टेक्निक्स बताया. उसमें से एक एंटिसिपेटरी सर्वे, बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच, उसमें थर्ड इज द इकोनॉमिक दैट इज मॉडल बिल्डिंग. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एनालिसिस. जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं दैट से द सेंसेक्स अगर ऊपर जाता है, इन दैट केस ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट इज गोइंग अप. पर उसका मतलब ये नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज के स्टॉक ऊपर ही जाते हैं. डेफिनेटली कुछ इंडस्ट्रीज के स्टॉक ऊपर जाते हैं, कुछ के नीचे जाते हैं. दैट इज द वेटेड एवरेज, सो द इंडेक्स इज गोइंग अप. सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्री वाइज, दैट से कौन सा इंडस्ट्री अभी ग्रो करने वाला है, कौन सा इंडस्ट्री में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. व्हेन इन इकोनॉमी ग्रोस, it is very unlikely that say all industry in the economy would grow at the same rate. हर एक का ग्रोथ, दैट इज द ग्रोथ रेट सेम नहीं होगा. So it is necessary to examine the industry specific factors in addition to the economic wide factors. First of all, an assessment has to be made regarding all the conditions and the factors relating to the demand of the particular product, cost structure of the industry, and other economic and the government constraints on the same. Since the basic profitability of any company depends upon the economic prospects of the industry to which it belongs to, an appraisal of the particular industry's prospect is essential. तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है. क्यों? क्योंकि सारा इंडस्ट्रीज एक ही रेट पे ग्रो नहीं होगा. तो कौन सा इंडस्ट्री ग्रो होगा सिर्फ वो हमको एस्टिमेट करना है. सो विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री एनालिसिस? प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, डिमांड एंड सप्लाई गैप, बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट का एटीट्यूड, स्टेट ऑफ द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च. These are the factors which are affecting the industry analysis. Friends,
वी अंडरस्टैंड दैट से यूजुअली से एक 4 मार्क का क्वेश्चन ये चैप्टर में से आता है, और जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस का सपोज कि क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू राइट दिस हेड पॉइंट्स, और उसके नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू राइट से अ फ्यू लाइन्स विच इज रेलेवेंट टू दैट पॉइंट. The following factors may particularly be kept in mind while assessing the factors relating to an industry. Product life cycle. An industry usually exhibits high profitability in the initial and growth stage, medium but steady profitability in the maturity stage, and sharp decline profitability in the last stage. So it speaks something like this. सो वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी इंडस्ट्री है वो अभी दैट इज प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल में कहाँ पे है वो हमको देखना पड़ेगा. वी नो दैट से जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है या सोशल मीडिया का कंपनीज है, से उन सब का जो इनिशियली जो ग्रोथ था और अभी का जो ग्रोथ है, इन दैट से देयर इज से डेफिनेटली अ डिफरेंस. या तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी द इफ एट ऑल वी टॉक अबाउट इंडिया, then in that case say the automobile sector is going to definitely face difficulty, say considering the pollution that say we have. तो बेसिकली हम लोग कौन से स्टेज पे हैं, so that is what we are required to see. कितना डिमांड है और कितना मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है वो भी उन्होंने आगे बताया हमको. ये सब चीज़ को हमको कंसिडर करना पड़ेगा. जैसे कि हम लोग ऐसा कई बार सुनते हैं दैट से द इंश्योरेंस सेक्टर में स्टिल देयर इज अ ह्यूज स्कोप, या तो कोई भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वहाँ पे भी ह्यूज स्कोप है. वाई? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज से नॉट सो मच से इंश्योर्ड इन अ वे दैट से द परसेंटेज ऑफ द इंश्योरेंस इज वेरी लेस. एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड दैट से द इन्वेस्टर्स हु पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वेरी लेस. तो देर इज अ ह्यूज स्कोप येट. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा हमको. डिमांड एंड सप्लाई गैप, दैट्स वेरी ट्रू. We understand that say by demand is more than the supply, then there is definitely a good scope of making investment. If at all supply is more than the demand, then in that case like it is very competitive और वहाँ से प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो वो जो गैप होगा ना, वो गैप हमको देखना है. दैट से गैप अगर बड़ा है then in that case definitely we should make investment, not otherwise. Excess supply reduces the profitability. That's very true, क्योंकि प्राइस कम हो जाएगा of the industry because of the decline in the unit price realization. While insufficient supply tends to improve the profitability because of the high unit price realization. Barriers to entry. Any industry with high profitability would attract fresh investment. अच्छा, बैरियर्स टू एंट्री में कुछ हम लोग ऐसा समझ सकते हैं. लेट्स से सपोज कि मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है. तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आसान है, कुछ मेरे को लाइसेंसेस देने पड़ेंगे और मेरे को लाइक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड विद दैट आई कैन स्टार्ट माय बिजनेस. बट सपोज कि मुझे सीधा मोबाइल प्रोवाइडर जैसे कि भी जियो है या तो एयरटेल है, वोडाफोन है, ऐसा मेरे को एक कंपनी ओपन करना है, तो वो थोड़ी आसान है. इट हैज़ अ ह्यूज प्रोसेस, इट हैज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. उसके बाद जाके मैं कर सकता हूँ. मुझे मेरा बैंक ओपन करना है. बैंक ओपन करने के लिए भी अगेन सो दैट इज अ ह्यूज लाइक द इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड एंड एवरीथिंग. सो बैरियर्स टू एंट्री क्या है वो हमको देखना है. अगर बैरियर्स टू एंट्री है इन अ वे दैट से वेरी फ्यू प्लेयर्स आर देयर, देन इन दैट केस इट्स लाइक अ गुड इंडस्ट्री इन विच यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन कंपेरेटिवली कम रहेगा. इफ एट ऑल बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, देन इन दैट केस से कंपटीशन ज़्यादा रहेगा और उसमें से आपको रिटर्न कम मिलेगा. जैसे कि मुझे फार्मास्यूटिकल का बिजनेस शुरू करना है, तो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे को सबसे पहले प्रोडक्ट का रिसर्च करना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड देन से द प्रोसेस स्टार्ट्स, देन द रियल प्रोसेस स्टार्ट्स. पर ये दोनों में ही बहुत टाइम लग जाता है. सबसे पहले प्रोडक्ट को डेवलप करने में और दूसरा उसका लाइक लाइसेंस ऑब्टेन करने में. उसके बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट में जा सकता है. एनी इंडस्ट्री विद द हाई प्रॉफिटेबिलिटी would attract the fresh investment. The potential entrant to the industry, however,
face different types of the barriers to the entry. Some of the barriers are innate to the product and the technology of the production, while the other barriers are created by the existing firms in the industry. अदर बेरियर्स का मतलब क्या, वो लोग प्राइस इतना कॉम्पिटिटिव रखते हैं कि फॉर एनीबडी टू एंटर इनटू द मार्केट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपको ह्यूज लॉस पहले बेयर करना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रॉफिट कर सकते हो. गवर्नमेंट एटीट्यूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट वो सेक्टर को प्रमोट करना चाहता है या उसको वो लोग लाइक डीमोटिवेट कर रहे हैं. जैसे कि टोबैको इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री को गवर्नमेंट हर साल टैक्स बढ़ाते जाता है. हर साल उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ वो लोग दे ट्राई टू मेक श्योर दैट से tobacco industry is going down, because ultimately it's going to help, that is affect the health of people. इनके उसके कंपैरिजन में if at all I make investment in a company say which is environmental friendly or say which helps the environment to improve, जैसे कि we know that say अभी electronic vehicles जो है say that is going to be the next vehicle that say India is going to see in the coming 5 or 10 years down the line. जो भी हमारे से मिनिस्टर्स है से वो भी इसी के ऊपर दैट इज से कॉन्स्टेंटली कमेंट पास करते हैं. सो वी कैन हैव अ काइंड ऑफ इंडिकेशन दैट से कहाँ पे ये इंडस्ट्री जाने वाला है और गवर्नमेंट का क्या उसके ऊपर हाउ दे आर गोइंग टू हैव से द काइंड ऑफ ओपिनियन से विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री. द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दिस एन इंडस्ट्री इज क्रूशियल and determinant of its products, that is prospects. जैसे कि हमको पता ही है that say from number of the sectors, so the government is say now making those sectors open for say the private sectors to enter. So that is also what we understand is that say जो sectors अभी सिर्फ government के पास है, even railways say that also they have opened for the say the private sector to enter into. Stages of the competition in the industry: high competition, low margin; low competition, high margin. Simple. Factors to be noted are the firm with the leadership capability and the nature of the competition among them in foreign and the domestic market. Type of the products manufactured, namely homogeneous or highly differentiated. Demand prospects through classification, namely customer-wide or area-wise. Changes in the demand pattern in the long or the intermediate or short term. Types of the industry in the firm is placed, namely growth, cyclical, defensive or decline. So again we understand that say कौन सा type का growth cycle है वो देखना पड़ेगा. Cost condition and the profitability, बहुत ही जनरल पॉइंट्स है ये. The price of the share depends upon the return. यानी सिक्योरिटी का प्राइस डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, और कंपनी का प्रॉफिट इसके ऊपर डिपेंड करता है दैट्स उनका कॉस्ट कंडीशन क्या है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, which in turn depends upon the profitability of the firm. Profitability depends upon the state of the competition in the industry, cost control measures adopted by its units, and growth in the demand for its products. Factors to be considered are cost allocating among the various heads. Example, raw material, labor, overhead, and their controllability. Overhead cost for some may be higher, while others the labor may be. Labor cost which depends upon the wage level and the profitability, so productivity needs close scrutiny. Product price, production capacity in terms of the installation, idle and operating. Level of the capital expenditure required for the maintenance, increase in the production efficiency. Investors are required to make a thorough analysis of its profitability. This is carried out by the certain ratios like GP ratio, operating profit, return on equity, return on capital employed, etc. तो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो भी डेटा है उसके हिसाब से हमको ये देखना है. टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, they play a vital role in growth and the survival of the particular industry. तो कितना रिसर्च में खर्चा होता है, नए टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन में खर्चा होता है, जितना वो खर्चा ज़्यादा होगा से उतना उसका लाइक रिटर्न का पोटेंशियल बढ़ेगा.
Technology is a subject to the change very fast, leading to obsolescence. Industries which update themselves have competitive advantage over others in terms of the quality, price, etc. Things to be probed in this regard are nature and the type of the technology used, expected changes in the technology for the new products leading to increase in the sales, relationship of the capital expenditure and the sales over the time. More capital expenditure means increase in the sales. Money spent in the research and development, whether this amount relates to the redundancy or not. Assessment of the industry in terms of the sales and the profitability in short, immediate, and long term. Techniques used in industry analysis. तो कौन कौन से फैक्टर्स है वो उन्होंने सबसे पहले बताया. अभी वो लोग टेक्निक्स बता रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं. इन दैट से उन्होंने दो चीज़ बताया, रिग्रेशन एनालिसिस and so the input output analysis. The techniques used for analyzing the industry wide factors are, यानी कि ऊपर वाले जो फैक्टर्स है सो उसका एनालिसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं. रिग्रेशन, investors diagnose the factors determining demand of for output of the industry through the product demand analysis. Factors to be considered are GNP, disposable income, per capita consumption, income, price elasticity of demand. For identifying the factors affecting the demand, statistical techniques like regression analysis and the correlation are used. तो जो हम लोग सिंपल समझते हैं R और R स्क्वायर, उसका यूज किया जा सकता है. R का मतलब क्या, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और R स्क्वायर का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. Input output analysis. It reflects the flow of the goods and services through the economy intermediate steps in the production process as goods proceed from the raw material stage through the final consumption. This is carried out to detect changing in the pattern or trends indicating the growth or the decline in the industries. तो इनपुट आउटपुट का भी हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके ऊपर से हम लोग इंडस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कंपनी एनालिसिस. तो अभी हम लोग लास्ट एक इंडस्ट्री हमने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री. तो फार्मा इंडस्ट्री में अभी हम लोग सिप्ला का एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ. Economy and the industry framework provides the investor with the proper background against which the shares of a particular company are purchased. This requires a careful examination of the company's quantitative and qualitative fundamentals. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से फार्मा इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो हो रहा है, पर सब कंपनीज थोड़ी ग्रो हो रहा है, उसमें से भी अपने को बेस्ट कंपनीज का सिलेक्शन करना है. तो जिसमें उन्होंने दे रखा है, हम लोग क्या देखेंगे, नेटवर्थ ऑफ बुक वैल्यू, सोर्सेस एंड कैपिटल ऑफ द फंड्स, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, साइज एंड रैंकिंग एंड ग्रोथ रिकॉर्ड. फाइनेंशियल एनालिसिस, competitive advantage, quality of the management, corporate governance, regulation, location and the labor management relationship, pattern of existing stock holding, marketability of the shares. So again we understand that these are the factors to be considered. फैक्टर्स के बाद टेक्निक्स. टेक्निक्स में क्या, सेम आर और रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस. सो दीज आर द थ्री थिंग्स. तो कौन कौन से फैक्टर्स को और कैसे, ये दोनों चीज उन्होंने बताया. चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कंपनी एनालिसिस में. नेटवर्थ ऑफ द बुक वैल्यू सिंपल है, नेटवर्थ जितना ज़्यादा से उतना क्या कंपनी में पोटेंशियल ज़्यादा. ओके, थियोरेटिकली स्पीकिंग से नेटवर्थ जितना ज़्यादा से उतना ये बताता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है. नेटवर्थ इज
sum of the equity share capital, preferential capital, free reserves, less intangible assets, and any carry forward losses. The total net worth divided by the number of the shares is much talked about the book value of the share. Though book value is often seen as the indication of the intrinsic wealth of the shares, this may not be so for the two major reasons. तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देखो बुक वैल्यू को कई बार इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है बट वो सही नहीं है क्योंकि बुक वैल्यू इज बेस्ड ऑन द पास्ट और इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर. First, the market price of the share reflects the future earning potential, which may have no correlation with the value of the assets. Second, book value is based on the historical cost of the assets of the firm, and these may be gross underestimates the cost of the replacement or resale value of these assets. बुक वैल्यू का कैलकुलेशन में हमको पता ही है, जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं बरसों से, जिसमें हमको पता ही है दैट से द लिमिटेशंस आर वन, डिप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट बट उसका रिप्लेसमेंट प्राइस बहुत ही डिफरेंट हो सकता है. सेकेंड, वी अंडरस्टैंड दैट से द बैलेंस शीट में जो असेट हमको बताया जाता है से वो असेट का आज का वैल्यू और जो प्राइस पर हमने लिया था उसमें बहुत ही फर्क हो सकता है. रिलायंस कंपनी इन जामनगर माइट बी फॉर्म इन 80s, तो 80s में जो उन्होंने लैंड लिया था और अभी का जो उसका लैंड का प्राइस होगा से इन दैट से देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, बट स्टिल उनका बैलेंस शीट में वही का वही लैंड का प्राइस चल रहा है. ऐसा. सोर्सेस एंड द यूजेस ऑफ द फंड. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस एंड द यूजेस ऑफ द फंड इज नोन एज फंड फ्लो एनालिसिस. तो बेसिकली कहाँ से पैसा आया और हमने कहाँ पे पैसा यूज किया, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ फंड फ्लो एनालिसिस. बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हम लोग कुछ कैश फ्लोज का याद करें, so there are three types of activities that we have. One is the cash flow from operating activity, cash flow from the investing activity, and cash flow from the financing activity. Then we understand that say always we should be having set a good amount of the cash flow from the operating activity. अगर operating activity से अच्छा cash flow नहीं है, then in that case we will be facing a difficulty. The identification of the sources कहाँ से पैसा आता है and use of the funds is known fund flow analysis. One of the major use of the fund flow analysis is to find out whether the firm has used the short-term sources to finance the long-term investment. तो आपको एक कॉन्सेप्ट आता था अगर आपको याद है तो जिसका नाम है कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी, एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी एंड मैचिंग फाइनेंसिंग पॉलिसी. तो कई बार क्या होता है कि कंपनी एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करता है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस विद द शॉर्ट टर्म फंड्स अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए. Such methods of the financing increases risk of the liquidity crunch for the firm. ऐसा किया ना तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, ऐसा किया तो करंट रेशियो कम हो जाएगा. As long-term investments, because of the gestation period involved, may not generate enough surpluses in time to meet the short-term liabilities incurred by the firm. तो short-term liabilities को पे करने के लिए हमारे पास enough cash flows नहीं भी रह सकता है. Many a firm has come with a grief because of this mismatch between the maturity period and sources and uses of the fund. यानी कि कई बार क्या होता है कि कंपनी शॉर्ट दैट इज वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम रखता है ना, उसकी वजह से या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस करते हैं, उसकी वजह से दे कम इनटू अ फाइनेंशियल क्राइसिस से टू रिडीम और टू मेक द पेमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट करता है, शॉर्ट टर्म में जनरेट नहीं कर सकता है. क्रॉस सेक्शनल एंड द टाइम सीरीज एनालिसिस. One of the main purposes of the examining the financial statement is to compare two firms. Compare a firm against some benchmark figure for its industry to analyze the performance of a firm over the time. This technique that are used to do such proper comparative analysis, common size statement and the financial ratio analysis. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट से जो भी बेस्ट है इंडस्ट्री में उसके साथ उसका कंपैरिजन करते हैं.
या तो फिर हम लोग दूसरी इंडस्ट्री का से कोई भी जो बेस्ट है उसके साथ इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल। फिर ये कॉमन से स्टेटमेंट दे रखा है, उसका मतलब ये है कि सेल्स को हम लोग 100 ले लेते हैं, 100, उसके प्रपोर्शन में सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लोग लाके दैट इज से देखते हैं जो कंपनी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं और इंडस्ट्री का डेटा। अगर कंपनी का एक्सपेंसेस रेशियो ज्यादा है, जीपी रेशियो कम है, देन इट इज नॉट अ गुड साइन, वाइस वर्सा इज अ गुड साइन। साइज एंड द रैंकिंग, साइज का मतलब क्या है, दैट से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है, उसका जो भी पूरी इंडस्ट्री में से उनका मार्केट शेयर कितना है, उसका कौन सा रैंक है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द साइज। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में से फोर व्हीलर्स में लेट अस से दैट द मारुति कंपनी इज से द नंबर 1, या तो फिर लेट अस से दैट से द फॉक्सवैगन इज से द नंबर 3। तो जो भी कंपनी है से वो इंडस्ट्री में कहाँ पे फॉल होता है से 1 to 5 के रैंकिंग में से वो हम लोग एनालाइज करेंगे। इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो देन इन दैट केस वो कहाँ पे फॉल होता है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर मार्केट शेयर ज्यादा है इट इज अ गुड साइन, वाइस वर्सा। मार्केट वैल्यू ज्यादा है इट इज अगेन अ गुड साइन एंड वाइस वर्सा। A rough idea regarding the size and the ranking of the company within the economy in general and the industry in particular would help the investment manager in assessing the risk associated with the company. In this regard, the net capital employed, net profit, return on investment, and the sales figure of the company are under consideration, may be compared with similar data of other companies in the same industry. It may be also be useful to assess the position of the company in terms of the technical know-how, research and development activity and price leadership. Growth record, simple. Growth in the sales, growth in net income, growth in net capital employed, growth in EPS in the past few years should be examined. The following three growth indicators may be particularly looked upon: price earning ratio, percentage of the growth in the earning, percentage of the growth in the net block. The price earning ratio, PE ratio, is an important indicator for the investment manager since it shows the number of times the earning per share are covered by the market price of the share. Any MPS upon EPS is what we understand is the price earning ratio. Theoretically, this ratio should be the same for the two companies with a similar feature. However, this is not so in practice due to many factors. Hence, by comparison of this ratio pertaining to the different companies, the investment manager can have an idea about the image the company and can determine whether the share is underpriced or overpriced. यानी प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा, then in that case we understand that उसका cost of equity ज़्यादा है. प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा होगा तो उसका cost of equity कम है, ऐसा हम लोग समझते हैं. Consider the following example. Market price of the share of rupees 100, face value दे रखा है, is 150 and 250. EPS दोनों का सेम है, price earning ratio is 6 and 10. So we understand that the B company is able to fetch more market value for the same earning per share. Just आप लोगों को बताने के लिए कि price earning ratio टेस्ला कंपनी का जो है, once upon a time it was देखो 30th of June 2020 को 562, 861, 1127, 667, 300, like that you can see that's a huge price earning ratio it has. अभी का प्राइस अर्निंग रेशियो 100 है, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक क्या हुआ, इट इज 1 divided by 100, it is 1%. That is the required rate of return by the investor. That is what's the huge valuation it has. It is obvious that the purchaser of the company A share pays 6 times of its annual earning,
while the purchaser of the B pays 10 times. If other factors, intrinsic value, growth potential, are quite similar, it is obvious that the share of the company A are preferable. यानी बेसिकली क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ द प्राइस अर्निंग रेशियो. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिसन केयरफुली, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर द प्राइस अर्निंग रेशियो इज गुड. हाउएवर वी हैव टू मेक श्योर दैट से अदर थिंग्स आर सेम, यानी ए और बी कंपनी बाकी सब चीज में सेम है. तो उस केस में से वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए. क्योंकि सेम अर्निंग हमको लोअर वैल्यू में मिलेगा, ऐसा उनका कहना है. In practice, however, the other factors are never similar in case of the two companies. The investment manager must try to ascertain why EPS in company B is comparatively low. Maybe some factors are not apparent. EPS calculation cannot be the sole basis of deciding about an investment. Yet it is one of the most important factors on the basis of which the investment manager takes a decision to purchase the shares. तो इन लोगों का कहना क्या है कि हमको ग्रोथ रिकॉर्ड में प्राइस अर्निंग रेशियो का ग्रोथ कंसीडर करना चाहिए. दिस इज बिकॉज इट रिलेट्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड अर्निंग पर शेयर. द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ नेट ब्लॉक्स shows how company has been developing its capacity level. Obviously, a dynamic company will keep on expanding its capacities and diversify its business. This will enable it to enter into new and profitable lines and avoid stagnation in its growth. तो इससे हमको ये फायदा हो सकता है. In this context, the evaluation of the future growth prospects of the company should be carefully made. This requires an analysis of the existing capabilities and their utilization.